Good morning to all of you and स्वागत समस्त फास्ट ऑफ ऑल माय डियर लर्नर्स। तो आज जो सेशन अच्छी स्पेशली आमर एएसओ मुझे कहती 1 तारिख टू क्लास स्टार्ट हम एएसओ एंड एएस ओडिशा पुलिस एंड अदर एग्जामिनेशन तो ताकू जमी आपण मैंने भल से कवर अप करें एंड निज प्रिपेरेसन को से लेवल को नहीं पारे ताकू एनश्योर करके आज क्लास आपण इंट्रोड्यूस करा जायछि। आज आम डिस्कसन करबा एएस ओपीएससी एएसओ एग्जाम जो आपणकर अगस्ट रे हबार अच्छी पूर्व बेसिकली गोटे इंपोर्टाट पार्ट जोटा आम कहूचे मॉडर्न हिस्ट्री रो पार्ट। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा फुल्ली कवर अप करवा आज सेक्शन में जिते भल से हो पार एंड बेस्ट वे रे हो पार ताकू आपण मैंने सब बेले प्रिपेरेसन करूँ कहीं मॉडर्न हिस्ट्री गोटे इंपोर्टाट पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू एंड प्रत्येकटी क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट लेवल आपन को सब बेले आसी थाए। तो माय डियर लर्नर्स छोट छोट जिन बट सब भल से बुझंतु कि प्रिपेरेसन रो मेन फाउंडेशन होची आपण माने जिते प्रिपेरेसन करूछंदी एंड ता सहित आमे जदि देखिबा को टाइप रो प्रिपेरेसन रहूची एंड केमिति क्वेश्चंस वेरिएशन देखुछन एंड आज रो क्लास रो क्वेश्चन देखला परे आपण भीतर गोटे आइडिया आसी जिवो कि नाही आपण केते कम प्रिपेरेसन हेसिंदी या जदि देखिबा यस जदि बेस्ट प्रिपेरेसन हेसिंदी देन आंसर तो आपण को सामना रे रहिबो ही रहिबो। लेट मी चेक ओके। तो ये आमर स्टार्ट करिया सेशन। तो ये आम जब देखा पूर्व आपण मैंने जो मैंने बर्तमान सुधा चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रखु ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाइबापी जहाँ भी सब क्लासेस आपण कवर अप कराऊँगी एंड जो मैंने अनएकाडेमी एप्लिकेशन इंस्टॉल करना इंस्टॉल कर क्लासेस टाइम टू टाइम आपण मैंने बैच कोर्सेस पाइपर ओपीएससी सब्सक्राइब कला बेले कोड यूज करेंगे अमिया लाइव या अमिया 10 कोड यूज करके निजर प्रिपेरेसन को आगे नहीं पार। गोटे फास्ट क्वेश्चन मुझे देवी तापर मुझे समस्त कहूँ चाहिए कि केते बाट आपण मान प्रिपेरेसन जाइए। यस फास्ट क्वेश्चन इन 1600 मसीह जितेबाला चार्टर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली फॉर मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड फॉर 15 इयर्स फास्ट इनिशियली 15 वर्ष जदि देखा कहाँ चार्टर माने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किए देते वेयर्स वाज गिवेन बाय 15 वर्षर फास्ट ट्रेड करने विक्टोरिया एलिजाबेथ जेम्स प्रिंसेप या ओलाइवर क्राउनवेल। तो यार राइट आंसर कथा जदि देखा तो सी होती क्वीन एलिजाबेथ 1 ओके फास्ट टाइम फॉर मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड फॉर 15 इयर्स 15 वर्षर इनिशियल जदि देखा प्रपोज रे क्वीन एलिजाबेथ इन 1600 इनिशियली द कंपनी स्ट्रगल्ड इन द स्पाइस ट्रेड ड्यू टू द कंपटीशन फ्रॉम ऑलरेडी well established Dutch East India Company and the company opened a factory in Batman on the fast voyage and imports for paper from Java were import from part of company ये 1683 रे बहुत ही बढ़िया yes प्रीतिश। तो 1683 पर्यंत इनिशियली 1600 मसीह 15 वर्षर चार्टर देकी आमे कहि परिबा क्वीन एलिजाबेथ पठेइथिले। नेक्स्ट वन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फास्ट इंग्लिश शिप देखंतु इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या आम कहीपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फास्ट इंग्लिश शिप कोटा आसीला आम कहीपर इंडिया को प्रतीश गुड मॉर्निंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फास्ट इंग्लिश शिप दैट कम टू इंडिया फास्ट इंग्लिश शिप कथा जदि देखा जोटा कि इंडिया को फास्ट टाइम आसीला तो सब माइंड रखी रखा दरकार एंड इजी वन बेस्ट वन ये हूँ आपणकर यस रेड ड्रैगन was the fast English ship that come to India and the Red Dragon fought the Portuguese at the Battle of Swally in 1612 and made several voyages to the East India Company। तो बेसिकली आम जब देखा जावा ये हूँ रेड ड्रैगन वाज दैट कंपनी ओके द फास्ट इंग्लिश शिप दैट कम टू इंडिया खाली इंग्लिश शिप आगू क्वेश्चन अच्छे डिफरेंट हु आर द फास्ट यूरोपियन टू सेट अप ट्रेड सेंटर इन इंडिया फास्ट यूरोपियन जे कि आम कहीपर ट्रेड सेंटर एस्टाब्लीशमेंट करते आम इंडिया रे। तो सिंपल जिन आम समस्ते जानीचे आमर भास्को डा गामा टाइम रे 1498 रे पोर्तुगीज माने यस द पोर्तुगीज वेर द फास्ट यूरोपियन टू सेट अप ए सी ट्रेड इन इंडिया। जो मैंने भी आपण क्लासेस देखुंदी आपण मैंने ट्राए करूँ आंसर करने ताकि निहाती भाव में निज भर गोटे कॉम्पिटिटिवनेस रहू एंड ये जिनस को केते भल से आपण मैंने जानीपारे ताकू भी आपण मैंने केमिति येस बेस्ट वे रे कवर कर भी आपण मैंने आसेस करूँ। तो व्हेन ही अराइव्ड एट कलिकत नाउ इन केरला द येस कोनियल एरिया ऑफ इन इंडिया बिगिन इन 1502
when the Portuguese Empire established the first European trading center at Kollam ये केरला रीजन आसुची नेक्स्ट देखि रखंतु who was the first Portuguese viceroy in India first Portuguese viceroy जदि देखिबा इंडिया रे जेतले फर्स्ट टाइम पे आमे कहि परिया पोर्तुगीज माने आसिले एंड तांगर भोयाग एठी एस्टैब्लिशमेंट हे गला एंड तांगर सेंटर से माने एस्टैब्लिशमेंट गले तो फर्स्ट आमे कहि परिया पोर्तुगीज बाबरे ये होसंदी फ्रांसिस्को दे अल्मेडा was the first Portuguese viceroy in India in 1505 and the king of Portugal appointed Dom Francisco de Almeida as the first Portuguese viceroy in India, okay, followed by 1509 by Dom Alfonso de Albuquerque. Almeida को परे हम जदि देखिबा Albuquerque आसिले in 1510 Albuquerque conquered the city of Goa and which has been controlled by the Muslims. Which one of the following factories in Bengal was established by Portuguese? देखो Portuguese माने western पटे पटे भी eastern पटे को भी जाइथिले तो एटी हमें कोई परे which one of the following factory which of the following yes factory in Bengal was established by Portuguese तो Portuguese रे जदि देखिया Bengal factory तो ये होची हुगली रे the factory of Hooghly in Bengal was established by the Portuguese. Questions गुड़ा important, questions गुड़ा different and आपण माने याकु भलो से मने रखिया दरकार. Vasco da Gama discovered the sea route to India in which one of the following year? Vasco da Gama जदि देखिबा sea route जेतेबेले फर्स्ट टाइम पई इंडिया को आसीथिले तो आमे समस्त जानिचे ये होची राइट आंसर दैट इज 1498 in 1498 the Portuguese encountered with India was on 20th May 1948 when Vasco da Gama reached Calicut on Malabar coast. Vasco da Gama sailed to India for second time with 15 ships and 800 men arriving at Calicut 13th October 1502 where yes the ruler was willing to sign a treaty. बेसिकली आम जब देखा जा तो भास्को डा गामा 1498 रे फर्स्ट टाइम में आसीथिले. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इंडिया? ए क्वेश्चन आंसर आपण माने समस्त जानि रखिया दरकार एंड बुझिया भी दरकार. ब्रिटिशर्स मानकर फर्स्ट आम जब देखा फर्स्ट फोर्ट कथा जब देखा दैट वाज द फोर्ट सेंट जॉर्ज. ओके ये हूँ ब्रिटिश एंड इट वाज इन 1664 1664 रे फर्स्ट टाइम पे करथिले एट द कोस्टल सिटी ऑफ मद्रास एंड द मॉडर्न सिटी ऑफ चेन्नई. The construction of the fort provided the impetus for further settlement and trading activity in what was originally uninhabited land. The fort is one of the 163 notified areas in the state of Tamil Nadu. Which of the following European trading company adopted the blue water policy in India? ब्लू वाटर पॉलिसी जदि देखा भारत में आपणकर डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पोर्तुगीज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. येस इफ वी टॉक अबाउट ब्लू वाटर पॉलिसी एंड दैट इज रिलेटेड टू वाटर और ओशन देन येस वी मस्ट थिंक अबाउट Portuguese company. Portuguese trading company adopted the blue water policy in India. Almeida became the first Portuguese viceroy in India to initiate the blue water policy. Okay. Which aimed Portuguese mastery on the sea and conferred Portuguese relationship with India only for the purpose of trade and commerce. तो blue water policy एथिपाई basically initiate कराइतला. रोजी साहू good morning. The Battle of Swally was fought between. Battle of Swally को जदि देखिबा ये आमर केबे जदि देखिया युद्ध होइतिला तो सिंपल जिनस गुड़ा आपण माने भलो से जानि रखिया दरकार एंड माइंड रे भी रहिबा दरकार जेतले आमे डिस्कशन करूचे कहीं ना जतको सब ब्रिटिशर्स माने फास्ट इनिशियली जो माने थिले आमे कहि परिबा ट्रेडर्स तांको भीतर ही कॉन्फ्लिक्ट चालुथिला एंड सेही टाइम रे आमे जदि देखिया जिबा दैट इज ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कंपनी. द थर्ड कार्नेटिक वार वाज फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश. After making substantial gain in Bengal and Hyderabad, the British, after controlling a huge amount of revenue, were fully occupied to face the French in Andorra. This is they defeated the French comprehensively in this battle. Good morning, Bhumagar and Rosie. Which of the following European wars played off the Karnatic War? देखो या भीतर कहि पारे को माने येस को जिनस को इवेंट कार्नेटिक वार्स को आम कहीपर इम्प्लीमेंट करथिला. आ यार प्रत्येकटी आम देखा सीरीज वाइज कनसेप्ट मुझे आपण नहीं आसबि. तो बेसिकली आम जदि देखा निहाती भाव में वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेसन प्लेयर्ड ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार इन इंडिया एंड द फर्स्ट कार्नेटिक वार वाज द फर्स्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कार्नेटिक वार that is established in early British dominance on the east coast of Indian subcontinent. Good morning, Samar Mohan.
तो इनिशियल जिनस गुड़ा आपण मैंने समस्ते जानी रखा दरकार एंड बुझा दरकार ये आपन को से बेसिकली मेंशन करुँची वेयर इन इंडिया डिड पोर्तुगीज बिल्ड देयर फोर्टिसेस तो वेयर इन इंडिया जदि देखा द पोर्तुगीज बिल्ड देयर फोर्टिसेस कथा जदि आसो तो डायरेक्ट ये आपण मैंने आंसर करिया दरकार एंड बुझा भी दरकार जो या रिलेटेड मेंशन करुँची तो पोर्तुगीज माने जदि देखा सिंपली से जदि कहीपर कोचिन देखूँ पोर्तुगीज को कथा आसिले आम माइंड रे आसी थाए गोवा किंतु पोर्तुगीज को जदि देखा फोर्टिसेस एंड तांकर इम्प्लीमेशन कथा जदि देखा तो सी हूँ कोचिन नहीं फास्ट इनिशिएट करते द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आम जदि देखा देखूँ एलिजाबेथ चार्टर देते किंतु कहाँ को टाइम रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिशमेंट होता तो ताकू आम कहीपर येस आमर एलिजाबेथ वानी माने से ही चार्टर देते which included cotton, silk, indigo, dye, salt paper, tea, opium. The company received the royal charter from Queen Elizabeth in 1600 for 15 years. Okay, it is the oldest among several similarly formed European East India companies. बहुत ही बढ़िया. Next कुछ what was the name of the first ship of East India Company of England which reached India? which reached here on August 24, 1680. ध्यान देले आपण माने जानि परिबे what was the name of first East India Company of England. इंग्लैंड रो देखंतु रेड ड्रैगन होची फास्ट इंग्लिश शिप किंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रो शिप रो जदि देखिबा दैट वाज हेक्टर आमे कहि परिया को आपण आउथरे भलो से मने रखंतु हेक्टर वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड which reached here on August 24, 1680. Next one, how many times did Vasco da Gama come to India? जदि आम भास्को डा गामा का कथा कहबा तो भास्को डा गामा भारत को केते थर आसथिले ओनली 1 टाइम ओनली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स सबले मन रखंतु एंड भल से बुझिया चेष्टा करेंगे भास्को डा गामा टोटाल उपरे आम जदि देखा निहाती भाव में 3 थर आसथिले बहुत ही बढ़िया प्रतिश Vasco da Gama come to India for 3 times. He arrived in India in September 1524 and died in the city of Cochin on Christmas Eve in 1524. 3 months after his arrival, as per royal instruction, Gama was succeeded as governor of India by one of the captains who had come with him, Henrik de Menges जो सुंदी जहाँ को आमे कही परिबा. Yes, Vasco da Gama 3 थर 1498 1524 देन तापर पुणी जाइए पुणी आपणर इनिशिएट करी आसीथिले आपणर. Where did the British East India Company open its first factory in India? British East India Company तांकर फास्ट फैक्ट्री देखी रखु क्वेश्चन टा जी इंपोर्टाट एंड से जानवा भी दरकार कहीं या रिलेटेड आपन को सब देता है. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आम कहीपर सूरत रे फास्ट करते. येस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फास्ट फैक्ट्री एट सूरत एंड द फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली. हुगुली रे से माने गला कलिकता पाखु गला 1651 हो जाइथिला किंतु फास्ट फैक्ट्री जदि देखिबा से माने ओपन करथिले सूरत रे. Which governor of Madras presidency made treaty of Mangalore with Tipu Sultan? Which governor of Madras presidency made treaty of Mangalore with Tipu? देखो टीपू सुल्तान को सहित जदि देखिबा तो ये आम कहि परिबा लॉर्ड येस मैग्नेट जदि देखिबा येस मैक्टेने आसिले द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी एदिरे कोन हेतला ना टीपू सुल्तान को सहित द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार वाज एंडेड इन 11th March 1784 with signing the treaty of Mangalore. The treaty was an important document in the history of India because आमे समस्त जानिछे last yes occasion when Indian power yes dedicate terms to the British who were under yes order of London to negotiate a peace deal. Who granted the permission to establish the first British factory of Hooghly in Bengal? First British factory Hooghly रे आपनकर yes establishment करिया पई के Hooghly रे देखंतु 1651 Hooghly रे फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री ओपन करिया पई ध्यान देबे जिनस गुडा एंड आपण माने बुझेउ चेष्टा करिवे दैट इज शाह सहूज को ना आसीता है एंड आपको आपण माने भल से मन रखिया दरकार. शाह सहूज ही थिले जे फास्ट ब्रिटिशर्स मान को हुगली रे फैक्ट्री एस्टाब्लिशमेंट करिया पई परमिशन देथिले. हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बेंगल? बेंगल देखंतु मुगल को ठारू अलग करी निजे एस्टाब्लिशमेंट करथिले से होसंदी मुर्शिद कुली खान.
founded independent state of Bengal. Murshid Quli Khan united his force and yes position in the year of 1719. He renamed his capital city from yes Murshidabad after his name. And yes, Murshid Quli Khan ही आपण जानी रखंतु. The name was approved by the Mughal Emperor and yes, thus Murshid Quli Khan became the independent Nawab of Bengal. Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as a trader? Last आम जदि देखा ट्रेडर हिसाब से आसी तो आपको आपण मैंने भल से बुझी रखा दरकार एंड जाना भी दरकार ये आपको जो ये मेंशन करुच्ची तो सी जाऊँ आमर कौन ए इज राइट आंसर सी आम कहीपर फ्रेंच. द फ्रेंच वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया as a trader. France was the last of the major European maritime powers of 17th century to enter the East. आम जदि देखा India trade as a significant way 6 decades after the foundation of English and Dutch East India Company in 1600 to 1602 at the time when they both companies were multiply factories को establishment करते. तो बेसिकली आम जदि देखा गले तो लास्ट आसी फ्रेंच मैंने ही आसी. Who among the following introduced cashew nut, pineapple and tobacco in India? Cashew nut, pineapple and tobacco जदि देखा इंडिया रे आकु किए एस्टाब्लिशमेंट करते. फास्ट अफ ऑल एगुड़ा तो जानी रखा दरकार जिते डायरेक्ट आसूँ कहीं इंडिया रे आम कहीपर गुड़ाए जिनस ब्रिटिशर्स या पर्तुगीज हो जातु या फ्रेंच हो जातु जानी तो या भर काजू नट कथा जदि देखा द पर्तुगीज इंट्रोड्यूस काजू नट काजू पाइनएप्पल ओके टोबैको and the Portuguese introduced in India following agricultural एगुड़ा आसूँ guava, custard apple, the pineapple and the papaya and also improved variety of coconut seeds. Portuguese मान को द्वारा. The greatest Portuguese governor who laid the real foundation of Portuguese power in India. Real foundation of Portuguese power in India आम जदि देखा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस डार्क या अल्बर्क्यू या भास्को डा गामा. डायरेक्ट एगुड़ा जदि आम देखा जावा तो भल से मन रखु सी इज राइट आंसर अल्बर्क्यू. द Portuguese greatest Portuguese governor who laid the real foundation of Portuguese power in India was Albuquerque. On 4th November 1509, Albuquerque became the second Governor General of a state of India and a position he held until his death. Albuquerque speedily showed the energy to determine his character and he intended to dominate Muslim world to control spice trade. So basically, I am going to say Albuquerque is right. Who Sir George Oxenden. Sir George Oxenden को ना जदि आसीबो ताले ये नाडा एक्चुअली कहाँ सहित रिलेट करसंदी. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ सूरत, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मद्रास या नन ऑफ द अबव. देखो सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन को कथा जदि आसीबो तो माइंड रे रखंतु फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे in 16th March 1667 Charles II ceded Bombay to the East India Company and they commissioned Oxenden to take possession of the island of Bombay in August in that year. The court of directors appointed him governor and commander in chief of Bombay. Which English governor of East India Company in India was expelled by Aurangzeb? औरंगजेब को द्वारा जदि देखा येस एक्सपेल करते ये आम कहीपर जहाँ को औरंगजेब डिटोनेशन करते ये आम कहीपर ब्रिटिशर्स को हत्या करते तो सी होती सर जॉन चाइल्ड. ओके चाइल्ड डेथ औरंगजेब को द्वारा ही जाता. चाइल्ड इन्वॉल्व्ड इन वार विथ मुगल एम्परर औरंगजेब yes whose troop captured Surat and forced Child to make peace. One of the peace terms required Child to leave India, but he died while the matter was still pending. Which of the following Mughal emperor gave an important farmland to the English to facilitating the trade center in India? देखो तो trade center कथा जो देखिए इंडिया रे तो इनिशियली आम कहीपर भल से जानी रखु फारूक सियार को फरमान कहले गोटे इंपोर्टाट डॉक्यूमेंट कौन सी देश पाई. It is English facilitating the trade in India. It was during Farooq Siyar reign in 1717 that British East India Company purchased duty-free trading rights for all of Bengal for more than 3,000 rupees a year. The Peshwa who engineered the capture of Sasti and Basin from Portuguese in 17
39 देखो पेशवा कथा जदि आसो ताले माइंड रखिए बाजीराव 1 आम कहीपर पोर्तुगीज को सहित कंप्लीट हो जाता दे टू पोजिशन ऑफ थाने इंक्लूडिंग द फोर्ट ऑफ आम कहीपर येस आम सस्ती आइलैंड एंड द फोर्ट ऑफ पर्सिया आम कहीपर मरोन सब्जो एंड द हिल ऑफ सैंटा क्रूज एंड सेंट मारिया was the first Indian native ruler to accept the system of subsidiary alliance. Subsidiary alliance को जदि देखिबा yes first Indian ruler to accept the subsidiary alliance. ध्यान रखिबे जेतबेले subsidiary alliance को कहूची तो एगुड़ा आपण माने माइंड रे रखिए दरकार एंड जानिबे भी दरकार. Nizam of Hyderabad was the first Indian native ruler to accept the system of subsidiary alliance. Tipu Sultan of Mysore refused to accept it, but after British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become the subsidiary alliance. Later, the Maratha ruler Bajirao II also accepted the subsidiary alliance in the Treaty of Aso. तो basically हमें कोई परिबा निजाम ऑफ हैदराबाद ही आसी था. The book Ziz Muhammad Shahi related to the knowledge of astrology produced in 1773. It was written by simple जिनस आपण मैंने भल से जानी रखिए भी दरकार. That is जसवंत सिंह of जोधपुर, राजा भरमल of अम्बेर, सवाई जय सिंह of जयपुर या महाराणा अंबर सिंह of उदयपुर. ध्यान रखिले आपण मैंने भल से जानीपारे राजा जय सिंह of जयपुर ये आप भल से जानी रखु. जीज मोहम्मद शाही related to the knowledge of astrology produced in 1733 written by सवाई जय सिंह of जयपुर. जंतर मंतर आपण मैंने समस्ते जानी. It is notable for employing the use of telescopic observation. The South Indian ruler who introduced sericulture as an agro-industry in his kingdom. Sericulture कथा जदि देखिबा yes rearing of silkworm तो ये आमे कहि परिबा निहाती भाबरे हमर आसीथांती टीपू सुल्तान. Sericulture was started in 1875 during the region of Tipu Sultan, who brought the mulberry from Bengal and the south and planted in Kolgan and adjacent area, while the silkworm Bombeksi mari actually आमे कहि गछरे ही माने ग्रो करि थांती चाइना रोना जायतिला. What was the bone of connection between Nizam Ali and the ruler of Hyderabad and the English? एमानकर जो bone of connection थिला तो सिंपल जिनस आम कहीपर द सरकार ऑफ गुंटूर was the bone of connection between Nizam Ali, the ruler of Hyderabad, and the English. Who among the following Mughal emperor granted permission to trade free of tax in the territories of Bengal, Hyderabad, and Gujarat? फारूक सियार को फारमान बेंगल पाई थिला. आ एठी आपण माने भल से जानी रखंतु ता सहित से मेंशन करथिले बेंगल, हैदराबाद, गुजरात को भी ब्रिटिशर्स माने आमे कहि परिबा फ्रीली ट्रेड करि परिबे. The Whiteley Commission was concerned with labor, education, public health, reorganization of civil service. देखो Whiteley Commission कथा जदि देखिबा it was basically yes आमे कहि परिबा थिला लेबर को पाई जोदरे आमे कहि परिबा yes a period of during was drafted proposal codes of civil criminal law. He appointed president to commission charged with drawing of yes comparative courts law in माने fixed time table रहितला ए मानक पई. When was Indian company brought under the parliamentary control? देखंतु इंडिया को पार्लियामेंट्री कंट्रोल ले आमे कहि परिया ब्रिटिशर्स माने केबे आनिथिले. सो माइंड रखिया दरकार 1773 जो फास्ट आसीथिले हमर yes वारेन हेस्टिंग रेगुलेशन एक्ट धरिकी ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर को जाइथिला. तापरे आमे कह 1700 माने yes 1858 लाळको हमर आसी जाउची कोन ना नियते तापरे हमर जोटा को आमे धरुचे yes ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर को जाइथिला पार्लियामेंट अंडर 1773. Which one of the following journal had conducted a bitter campaign against the abolition of practices सती सतीदाह प्रथा को हटेबा पई को पेपर रे ये इनिशिएट करा जाउथिला. तो ये होची समाचार चंद्रिका. ए क्वेश्चंस गुडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स अछि भाबई रखंदु करी रखंदु. संवाद चंद्रिका भवानी चरण was an master of satire and between 1825 to 31 yes criticized the men and who were including a new way of life and abandoning the traditional simple habitats. In 1757
सिराजुद्दौला अटैक द ब्रिटिश फैक्ट्री देखो 1757 आम कहीपर सिराजुद्दौला जो ब्रिटिशर्स को मना करते डोंट बिल्ड जदि देखिए फोर्टिसेस तैयारी करनी बट ब्रिटिशर्स मैंने शुणी नथिले तो सही टाइम रे आम कहीपर कासिम बाजार सिराजुद्दौला अटैक ब्रिटिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार and yes stop fortification and pay revenues. After the negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company official, locked the warehouse, and yes disarmed all Englishmen and blocked English ship. Then he marched to Kolkata to establish control over the companies brought there. Which one of the following state was a milk cow for the Britishers? मिल्क काउ फॉर द ब्रिटिशर्स माने आपण माने सबले मन रखंतु गोटे ही आसीबो नवाब ऑफ औध एंड औध ही थिला ब्रिटिशर्स माने को पई स्पेशल हु एमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वाज द फर्स्ट टू कम इंडिया टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशनशिप विद द कंट्री एटा ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर सारिचे पोर्तुगीज ही आसीतिले द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस गिव द ओनरशिप ऑफ लैंड टू देखंतु परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस गिव द ओनरशिप ऑफ लैंड परमानेंट सेटलमेंट रे आमे जदि देखिबा डायरेक्ट जमींदार को दिया जाइतिला ओके यार आमे जदि देखिया पूरा स्पेशलाइज वीडियो करि देइछि मु आपण माने मो चैनल ले पाई परिबे कि परमानेंट सेटलमेंट हे गला रोदारी सिस्टम हे जाउछि ओके एगुडा गुटे देखि नेबे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास एंड ये सकाळ सकाळ आपण माने समस्ते 12 जन पिला बर्तमान सुधा एक्टिव अच्छा खुशी लगे देखिकी एंड होप करी कि आगू आहरी नंबर्स बढ़ो शेयर करूँ फ्रेंड मान सहित जो मैंने डेली बेसिस रे प्रिपरेशन होती एंड येस दीज आर द माई सोशल मीडिया हैंडल्स आपण मैंने जॉइन करेंगे यार पीडीएफ आपको टेलीग्राम रे मिल जाव बाकी आपण मैंने जो मैंने अनएकाडेमी रे क्लासेस करिया चाहते क्लासेस आपण मैंने करेंगे डेली आपण क्लासेस हो फ्री क्लासेस स्पेशल क्लासेस आज 10टार आपणकर गोटे फास्ट ट्रैक कोर्स माने स्पेशल क्लास माने फ्री क्लास आपण माने पाई परिबे ताकू आपण मानकर पॉलिटी रो गोटे पूरा फास्ट ट्रैक रहिबो आज रो क्लास रे तो तेणु करी डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी मो ना अमिया रंजन दास सर्च करेंगे एंड जदि आपणकर प्लस को सब्सक्राइब कर एसओ तो से आपण मैंने ट्राए करेंगे कोड यूज करने अमिया 10 कोड यूज कले मुझे आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करी एंड बाकी कोड यूज कर सारापर मत 9090193332 को मेसेज करदे थैंक यू वेरी मच धन्यवाद जय हिंद जय जगन्नाथ अरे अनिल थैंक यू एंड करिए।